आज का जो टॉपिक है हमने कल ये थोड़ा पढ़ा था शाइजोकार्पिक फ्रूट। इसमें इट इज ए मल्टी सीडेड फ्रूट। एक फ्रूट में बहुत सारे सीड्स होते हैं। एंड आफ्टर राइपनिंग ये जो फ्रूट है इट डिवाइड्स इनटू सेगमेंट्स। एंड दो सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेरिकार्पस। मेरिकार्पस हो गए पार्ट्स ऑफ द फुल फ्रूट। कार्प इज फॉर द फ्रूट और सीड। एंड दोज आर कॉल्ड मेरिकार्पस। एंड सीड्स जो होते हैं इन दीज फ्रूट शाइजोकार्पिक फ्रूट्स दे कम आउट व्हेन पेरिकार्प इज डिस्ट्रॉयड। पेरिकार्प की जब डिस्ट्रक्शन होती है सो दे हैवंट एनी स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ डिहिशंस। Seeds are released only when pericarp destroys. The fruit is developed from, they can develop from monocarpellary ori, they can develop from bicarpellary ori, and they can develop from even multicarpellary superior ori. And ori can be inferior as well. That is, we have all cases of the condition of the ori. That is, ori can be bicarpellary, having two carpellets, having many carpellets. Ori can be superior, ori can be inferior. So these are the conditions from which schizocarpic fruits can develop. Those mericarpus, that is segments of these schizocarpic fruits, they can contain one or two seeds. इसमें अब एग्जाम्पल्स आते हैं, लोमेंटम है, क्रेमोकार्प है, रेगमा है, कार्सिरुलस है, अर्ट्रिकल है, एंड डबल समारा ना। सो कमिंग ब्रीफली टू दीज टाइप्स, लोमेंटम में क्या होता है? लोमेंटम जो फ्रूट होता है डेवलप्स लाइक ए लेग्यूम, ये लेग्यूम की तरह होता है। एंड फ्रूट्स आर कंस्ट्रिक्टेड आर डिवाइडेड इन वन सीडेड मेरिकार्प। ये जो फ्रूट्स यहाँ पे होते हैं दे आर कंस्ट्रिक्टेड आर डिवाइडेड। कंस्ट्रिक्टेड मतलब इस तरह, कंस्ट्रिक्टेड आर डिवाइडेड इस तरह। मैं बनाऊंगा कैसे? फॉर एग्जांपल आपने टैमारिंड देखी होगी, इसमें ऐसे कंस्ट्रक्शन होता है टैमारिंड की वो। एंड दिस segment, this is the mericarp, this is again the mericarp. So when this schizocarpic fruit it breaks into these mericarpus, one two three, and this mericarp, that is this, like portion 3, portion 2, portion 1, these can have seeds can be 1 2 depending. So in the momentum we have examples like we have tamarind, we have cassia fistula, mimosa pudica. आप acacia में वो उसकी पार्ट देखिए, that is a typical example of schizocarpic fruit. And schizocarpic fruit में it comes under lomentum. Now we have cremocarp. This is again a type of schizocarpic fruit. Cremocarp, this is a double-seeded fruit and develops from bicarpellary syncarpus inferior ori. This is important. That is, cremocarp fruit develops from bicarpellary. Ovary can have two carpels and the carpels are fused and ovary is inferior. That is, inferior ovary means hypogynous. Epigynous condition. Epigynous condition means all floral parts other than the ovary are the above the ovary. Ovary is inferior, ovary occupies the lower position. And we can show it in the floral formula as. Now, on maturation, this cremocarp जो है, it dehisces from apex to base in such a way that two mericarpus form. इसमें जब इसकी डिहिशंस होती है इसमें दो सेगमेंट्स बनते हैं, two mericarpus. And those mericarpus, each mericarp may contain one seed. These mericarpus are attached with carpophore. हमने carpophore पढ़ा था, if you remember, जब मैंने फ्लोरल पार्ट्स में वो गाइनोफोर, कार्पोफोर, किसी को याद है? वो डायग्राम मैंने बनाई थी, एंड्रोफोर, किसी को है याद? आप है नहीं कोई अवेलेबल टू टॉक? कार्पोफोर सेपल्स और पेटल्स के दरमियान जो इंटरनोड है उसको हमने क्या कहा था? पेटल्स और स्टेमन्स के दरमियान जो इंटरनोड है उसको क्या कहा था? एंड एंड्रोफो
स्टेमन्स और पिस्टल के दरमियान या कार्पल के दरमियान जो सेगमेंट था उसको क्या कहा था? गाइनोफोर। गाइनोफोर। कार्पोफोर किसको कहा था? व्हाट इज कार्पोफोर? किसी को नहीं पता। सर जब थैलमस ये कार्पल से आगे होंगे एबो हाइट पे। तो सॉरी मुशरान पे लगता है कि थैलमस ये इलोंगेट हुआ था एबो द कार्पल्स। in a flower an कार्पल। elongated axis that raises the stem of the pistil above the stamens. It is जो स्टेमन्स और पिस्टल के दरमियान सेगमेंट होता है उसको हम कार्पोफोर कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे। आप यहाँ देख सकते हैं कार्पोफोर stamens have arisen above the this pistil and this segment it constitutes the carpophore। आया समझ? यस सर। हाँ हमने अस पढ़े तुम सारी तो अगर याद पायो सो कार्पोफोर पढ़ा था, एंड्रोफोर पढ़ा था, एंड्रोगाइनोफोर पढ़ा था। सो लेक्चर दिता यस सर। पढ़ा था कि नहीं? यस यस सर। सर ऑनलाइन बताया आपने। नहीं नहीं ऑफलाइन ही पढ़ाया था। ऑफलाइन पढ़ाया था मैंने वो नो सर कैलेक्स अच्छा ऑनलाइन भी पढ़ा और मैंने वो उसका वो फिगर भी बनाया था बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। ये- इंटरनो ये हाँ, जो फिर आपने प्रेजेंटेशन। शेयर भी किया था, ठीक है। अच्छा कार्पोफोर इसमें है। कार्पोफोर इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ रिसेप्टैकल। रिसेप्टैकल क्या हो गया जनरली? रिसेप्टैकल इज या प्लेटफॉर्म टू ऑल अदर फ्लोरल वर्ल्ड्स। हाँ फ्लोरल वर्ल जिस पे बोर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल कोरिएंडर, क्यूमिनम, पेनिकुलम, बर्दियान, इसमें ये जावेन ये आते हैं इसमें। अब रेगमा, रेगमा जो है दिस फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ट्राई टू पेंटाकार्पलरी syncarposaury and ori is superior। ori can be, it can have three carpels to five carpels and the carpels are fused। The ori is superior, ori occupies the position above all floral parts। In it three locules are present and its fruit breaks into three one-seeded part। इसमें रेगमा में क्या होता है? Since regma is a type of schizocarpic fruit and it breaks into three मेरिकार्पस, इसमें तीन मेरिकार्प बनते हैं and each मेरिकार्प contains one seed। ऐसे for example this is the full fruit regma and it can break into three mericarpus, one mericarp, two, three, and each mericarp will contain one seed। This will be the ragma, and ragma develops from tri to pentacarpellary syncarpous ori, while the carpels are fused and the ori is superior।
Each part in the ragma fruit is called coccus. हर किसी पार्ट को कोकस कहते हैं. At the outer end of the pericarp, जो फ्रूट वाल होता है, उसके बाहर spines are found. For example, Forbiaceae family के बहुत सारे members में this ragma fruit is found. Like castor has 3 cocci. Geranium has 5 cocci. For example, we can see the ragma fruit. हम देखेंगे. We can Google it as well. यहाँ पे है. This is ragma. You see it. ये है ragma of castor. See, इसके बाहर वाले जो इसका एपिकार्प है, एपिकार्प पे इस पे स्पाइनस है. And it has broken into 3 mericarpus. And each mericarp is called a coccus. कोकस. ठीक. अब यहाँ पे देखिए वो जो कार्पोफोर है. दिस इज द कार्पोफोर. स्टेमनस और गाइनोशियम के दरमियान, कार्पल के दरमियान जो सेगमेंट होता है, इसको कार्पोफोर कहते हैं. यहाँ पे आपको रिवाइज होता है वो सारा जो आपने फ्लावर्स में पढ़ा है. अब हमारे पास है कार्सिरोलस फ्रूट. ये जो कार्सिरोलस फ्रूट है, कार्सिरोलस फ्रूट, इट इज ए ड्राई फ्रूट that develops from multicarpellary or bicarpellary syncarpus superiori. अब अगर कार्सिरोलस के बारे में we do not know anything, still we know that it belongs to schizo. It belongs to what? Schizocarpic fruit. Schizocarpic fruit. And अब इसमें क्या है, कार्सिरोलस में ये डेवलप होता है. The carpel can have many, this ori can have many carpels. It can have 2 carpels, and the carpels are fused. Again, the ori is superior. अब नंबर ऑफ यहाँ पे जो शाइजोकार्पिक फ्रूट कार्सिरोलस है, it can break into मेरिकार्पस. And number of मेरिकार्पस जो है यहाँ पे is more than locules because of formation of false septum. यहाँ पे false septum बनते हैं अंदर ऐसे पार्टीशंस बनते हैं जो ट्रू पार्टीशंस नहीं होते हैं. और इसमें जो मेरिकार्पस है वो दिखते हैं कि मेरिकार्पस आर लार्जर इन नंबर देन द locules because false septum arise here. It can divide into 4 one-seeded locules. इसमें 4 locules बन सकते हैं. and each locule में contain, each chamber में contain one seed. For example, osmum, basil, babar, salvia. These are examples of these fruits. Hollyhock, abutilon. These belong to family Malvaceae. Now we have atricle. Atricle क्या है? It is again, यहाँ पे it is a diagram of atricle of amaranthus. यहाँ पे क्या है? It is a single seeded fruit. इसमें एक ही seed होता है. And it has a thin membrane. डिहिसेंस जो इसकी है, इसका रप्चर होना, इट जनरली फ्रॉम द कैप, ऐसे ऊपर कैप थ्रू होता है इसका डिहिसेंस. एंड इट डेवलप्स फ्रॉम बाइकार्पलरी यूनिलैक्यूलर सिनकार्पस सुपीरियरोरी द कंडीशंस फॉर its development. That is, it can the gynoecium can have 2 carpels, and there is only 1 locule. The carpels have fused in such a way that the septum, that the partition between the gynoecium of 2 carpels that dissolves, and the carpels are fused, they are syncarpus or is superior. इसमें amaranthus example है, acaranthus है example. Now we have double samara. What is now double samara? Double samara is, अगर हम, if we do not know anything about double samara, still we know that it is a schizocarpic fruit. And in double samara, हमने एक samara पढ़ा था ऊपर. double samara में क्या है? It develops from bicarpellary syncarpus superiori.
Yani the condition for development of this fruit is that the carpel, there are two carpels in the gynoecium and the carpels are fused. Besides the ori is superior. Pericarp जो है, that is the fruit wall, it develops two wings. Single samara में जो samara हमने पढ़ा था उसमें एक ही wing था. यहाँ पे it has two wings. It has two. On maturation it divides into single seeded mericarpus. जब इसकी मैचुरेशन होती है फिर इट डिवाइड्स इनटू सिंगल सीडेड मेरिकार्पस. इसमें टू मेरिकार्पस बनते हैं, यानी दो सेगमेंट्स बनते हैं. इसमें आता है एसर, आता है समारा, आता है. दिस इज सी द लोमेंटम ऑफ दिस एकेशिया. किकर का ये लोमेंटम देखिए, किकर हियम. एंड दीज आर, ये जो सेगमेंट्स है कंस्ट्रक्टेड सेगमेंट्स, दीज कैन ब्रेक and these are called the mericarpus. We have this ragma of castor, we have carcerolus. These are all schizocarpic fruits. At least you can remember here the examples and you see the diagrams of these fruits. अब हमारे पास है, now we have this aggregate fruit. Coming to the last portion of this classification of fruits and the types of fruits, aggregate fruits are, if we go it is literal meaning, aggregate fruit, ऐसे fruit होते हैं, they develop from, they are in aggregation, they are in group, and they develop from multicarpellary apocarpusori. What is now meant by apocarpusori? अभी तक हम सिनकार्पस पढ़ रहे थे. एपोकार्पस क्या होता है? Carpels free from each other. What is apocarpusori? Carpels free from each other. Carpels are free from one another. Carpels are not fused. When carpels are not fused, the carpels are free and carpels are many. Because in apocarpusori, each carpel is separated from one another. There isn't fusion of the carpels. The carpels have their individuality. For example, I can draw here the one carpel, and you know in a carpel you have the basal swollen part, which is the auri, and we have another carpel, and the carpels are free throughout. We have another carpel. Since we know that fruit is developed from the carpels, mostly from its gynoecium part, when all the three carpels develop into fruits, that is auri of all the three carpels has the potential to develop into fruit. So we can have, in an inflorescence, we can have three fruits, and the fruits are closely aggregated. These three fruits, fruit number 1, fruit number 2, and fruit number 3, they may be closely aggregated. So in the aggregation there are three fruits which are closely placed. Such kind of fruits are called aggregate fruits. And इसमें जो each individual fruit, जो एक एक fruit होता है, उसको हम क्या कहते हैं? Fruitlet. जिस तरह एक compound leaf में there are leaflets, इसी तरह एक aggregate fruit में each fruit is called the fruitlet. These fruits are made up of bunch of fruitlets which are known as itario. The bunch of fruitlets are known as Itario. Itario. Itario, exactly, Itario. Etaerio, Itario. We have now Itario of follicles, Itario of achenes, Itario of berries. Itario follicle हमने पढ़ा है वहां सिंपल फ्रूट में, एकीन भी पढ़ा है, बेरीज भी पढ़ा है. इनके साथ रखेंगे आगे प्रीफिक्स रखेंगे Itario. So Itario will be the group of follicles. Itario of achenes will be the achenes are in a group. Itario of berries will be that berries are in a group. So these kinds of fruits, इनको हम क्या कहते हैं? Aggregate fruits. क्या कहते हैं? And in aggregate fruit, we have fruitlets. That is, there are so many fruits in the inflorescence, and these fruitlets constitute what we call itario. And so, itario of follicles, itario of achenes, itario of
berries will constitute the aggregate fruits, wherein area of follicles have so many follicles in the fruit, so many achenes in the fruit, so many berries in the single fruit. And the fruits are closely packed, fruits are closely placed, fruits are jumbled, they are in a group. So we call these fruits as aggregate fruits. अब area of these follicles क्या होता है? You see here, these are these are these are so many follicles. These are so many fruitlets. यहाँ पे area of berries. यहाँ पे each fruitlet is a berry. area of drupes. जब बहुत सारे drupe जो हमने पढ़ा fruit, जब उनका group होता है उसको हम area of drupes कहते हैं. Coming to the area of follicles, each fruitlet is a follicle जो हमने उधर simple fruits में पढ़ा. For example, calotropis है, catharanthus है, magnolia है. Magnolia के बारे में it is one of the primitive angiosperms. We have now area of achenes. In this aggregate fruit, each fruitlet is an achene, and you can understand again. You go back to the fruit types, and there you study again the achene. Then understanding achene will help you the understanding of the area of achenes. For example, ranunculus है, strawberry है. Strawberry is a group of fruits which we call area of achenes. Rose है, lotus है. Now we have area of berries. area of berries में क्या आता है? It is again an aggregate fruit, while each individual fruit is a berry, small berry. For example, polyalthea, annona sucamosa, custard apple जिसको हम कहते हैं. We have area of annona. All the berries are arranged densely on thalamus. Pineapple भी आपने देखा होगा. Pineapple is area, यानी aggregate fruit. So we have area of drupes. In area of drupes, in this type of fruit, Romesa, you mark the attendance and along with the phone numbers. अपना Yes, sir. phone number और ये चैट बॉक्स में phone number और ये, क्योंकि बाकी हमें निकालने हैं ग्रुप से. area of drupes, in this type of fruit, many small drupes develop from different carpels. Now we have composite fruits. Composite fruit क्या होता है? So we will finish it just in 2-3 minutes. We are left with 8 minutes. इसको हम complete करने की कोशिश करेंगे because we have been studying fruits for last 4 days now. This composite fruit क्या हो गया? All composite fruits are all false fruits. ये आप एक headline याद रखेंगे. सारे composite fruit क्या होते हैं? False fruits. False fruit. False fruits. All composite fruits are False. false. And this type of fruit differ from aggregate fruit that in place of single ovary, many ovaries and many floral parts combine together to form a fruit. यहाँ पे बहुत सारे ovaries, बहुत सारे gynoecium and बहुत other parts of the flower too. जिस तरह हम mathematics में composite number बोलते हैं. Do you know what is composite number in mathematics? What are prime number? Composite number क्या होते हैं? Prime number क्या होते हैं? Likewise, we have composite fruits as well. In composite fruits, आप composite number देख लेना. What are composite numbers? कल मुझे बता देना. In composite fruit, generally whole inflorescence is modified into fruit. यानी सारी की सारी inflorescence. Since in inflorescence, that is pattern of arrangement of flowers. So these flowers here, it is a type of raceme inflorescence, and all 4 flowers will constitute the one fruit. That is, the flowers are so closely placed that whole inflorescence will form the one fruit along with other parts of the flower. So these fruits become composite fruits. There are 2 types of composite fruits. One is soroses and other is geocarpic fruit. So what is now soroses? Soroses क्या होता है? This soroses, अगर if we do not know what soroses is, still we know that soroses is a composite fruit. This fruit develops from spike. We have a spike inflorescence.
It is a racemose type of inflorescence, spadix type of inflorescence, or catkin inflorescence. Here it is catkin inflorescence. These inflorescences can form the sorosis type of fruit. यहाँ पे जो peduncle है, that becomes thick, spongy and woody. For example, we have jackfruit, uh, Padanus, Screwpine, pineapple. These are pineapple is not pineapple is not aggregate fruit. Pineapple is a sorosis. जैक फ्रूट इतना बड़ा हो जाता है कि अगर ये फुल बोर्ड गए फिर सर पर गिरेगा, इट विल काज इंजुरी। इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि वहां पे सारी इन्फ्लोरेसेंस पार्टिसिपेट करती है इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। यू कैन गूगल द जैक फ्रूट। क्योंकि हमारे पास मिनट कम रह गए, मैं आपको दिखाता ये जैक फ्रूट। इसको काथल भी कहते हैं। पिस्टिलेट फ्लावर्स आर डेवलप्ड around that peduncle, and in fruit formation pericarp becomes spongy and fused. The jackfruit, we eat it as vegetable as well. In pineapple जो peduncle है, peduncle bracts and perianth, they become fleshy due to the fusion of perianths of flora. uh, all flowers a composite fruit of pineapple is formed. So botanically अगर आपको कोई पाइनएप्पल के बारे में पूछे कि व्हाट इज पाइनएप्पल, इट इज ए कंपोजिट फ्रूट। और जो पेडंकल है उस पे जो ब्रैक्टिस होते हैं, यू नो ब्रैक्ट, ब्रैक्ट इज ए फ्लावर पेडिसल पे, इट इज ए स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एंड पेरियांथ, यू नो पेरियांथ होता है द when calyx and corolla are not differentiated, they constitute the perianth whorl. And here the perianth and the bracteates become fleshy, and those aggregate to form the composite fruit of pineapple. Mulberry, you know mulberry? Yes, sir. आजकल मलबेरी को एक अच्छा फ्रूट माना जाता है। वी हैव नाउ हाइब्रिड मलबेरीज, वहां पे वो बहुत बड़े फ्रूट बन जाते हैं। यहाँ पे क्या है, पेरियांथ जो है दैट बिकम्स फ्लैशी। पेरियांथ इज आउटर वर्ल्ड when there isn't a differentiation of sepals and petals, there is only one whorl in place of sepal and petal। हमें पेरियांथ पढ़ना भी है, एक दो दिन में हम पेरियांथ पढ़ेंगे, क्योंकि पेरियांथ और बार्क और क्या कहते हैं, ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ सिटम, वो भी रह गए। सीड तो इसी के साथ खत्म करेंगे कल कल परसों। यहाँ पे वी विल एट लीस्ट require three more lectures, 3 or 4 only। मलबेरी में जो है पेरियांथ becomes fleshy, calyx of every flower becomes thick, sweet and fleshy and edible। So अगर आपको कल बॉटनी में पूछा जाएगा कहीं भी क्वेश्चन कि मलबेरी कौन सा फ्रूट है, you will at once tell it is a composite fruit। And what is the edible part in the mulberry? What is the edible part in the mulberry? It is perianth। It is perianth, mostly calyx of every flower. It becomes thick, fleshy and edible. So it will be the edible portions of this mulberry. See the sorosis of jackfruit। ये it is available now। ये markets में available होता है। We can cut it in pots and cook it as a vegetable। This is a very good vegetable। These are perianth, outer these perianth and bracts. This is the inner axis. These are seeds in it, and this is a composite fruit wherein the whole inflorescence along with perianth, along with bracts, has taken part in the formation of this fruit. We have this now. This is fig. Fig, you know, Syconus of Yes, fig. sir. This is an inflorescence. Here. Fig isn't a true fruit. It is a false fruit because all composite fruits are False. false fruit। false fruit। अब यहाँ पे हमें है, we are running very short of time। सीड रहना चाहिए कल के लिए बस। अब यहाँ पे जियोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? व्हेन फ्रूट डेवलपमेंट आकर्स इनसाइड द सॉइल। जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ। And when fruit development occurs within the soil, for example, groundnut,
if you study the development of groundnut, इसकी developmental biology, you will be very surprised that how it takes place. After pollination, after pollination, the flowers of the groundnut get buried under the soil, and there they develop into the fruit, and those fruits ग्राउंडनट को गरीबों के बादाम भी कहते हैं. मूंगफली जो है, मूंगफली के साथ खेन, it is very rich in unsaturated fatty acids which are very good for the health, and groundnut oil is better than the oil you uh, eat in cooking. Mustard Mixed with oil. cooking. Groundnut is very good oil. So we are finished with this geocarpic fruits. Tomorrow we will study or start seed. So I hope that कि कल सारे अटेंड करेंगे क्लास. आज जिन्होंने किया, बाकी लोगों को हम बस निकाल रहे हैं.